Hello guys, welcome to a brand new series with me Chef Afraz of breakfast. Breakfast is the most important meal of the day. Yes, और अक्सर हम ब्रेकफास्ट को मिस कर देते हैं, बट आज रेसिपीज़ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ही करूँगा, बट एग की एक रेसिपी, एग काफ़ी खाते हैं हम ब्रेकफास्ट में, एंड वन रेसिपी दैट इज़ वेरी लग्जूरियस एंड आई लव द मोस्ट आर टर्किश एग्स। सबसे पहले इसका एक बटर बनाएंगे हम, चिली बटर। तो पैन ऑन हीट और इसमें जाएगा बटर। सो जस्ट स्लाइड इन द बटर एंड लेट दिस मेल्ट। सो बटर यहाँ पर मेल्ट हो रहा है। बाय दैट टाइम आई एम गोइंग टू ग्रैब अ बोल टू मेक आर गार्लिकी योगर्ट। सो उसके लिए आई हैव हंग सम योगर्ट। यू कैन ऑल्सो यूज़ ग्रीक योगर्ट इफ इट इज़ अवेलेबल, और अगर नहीं है तो आपने सादे दही को एक मलमल के कपड़े में बांध कर उसे रात भर अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखेंगे विथ हैवी वेट ऑन इट, तो जो सारा मॉइस्चर है, पानी है, वो निकल जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विथ अ नाइस थिक योगर्ट। सो दिस इज़ द हंग योगर्ट। बटर, एज यू कैन सी, इट इज़ melting, and at this stage I'm going to add chili flakes. Just look at the color. Chilies are going to impart that nice lovely tinge of red. This is done. I'm going to shut the gas. चक्का दही हंग योगर्ट, इसे ले लेंगे एक बोल में। गार्लिक का फ्लेवर काफ़ी प्रोमिनेंट होता है इसमें। सो विथ अ मिंसर or a grater you can grate the garlic. Next I'm going to add some seasoning, salt, some crushed black pepper, थोड़े से fresh dill leaves, अब बस इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। So nice thick creamy garlic flavored yogurt. So our yogurt is done. It's time for the eggs. So I kept water for boiling. Lower the flame and we just want the water to simmer. I'm going to just toast some bread slices. So in goes into the toaster. So free range eggs, crack this over a strainer, but for Turkish egg, just give some attention to the eggs. So this is the watery bit which we don't want, which will give strings when we are poaching egg. So just want to get rid of that. Now let's transfer this so that it is easier to pour into the hot water. You can also give this a nice whisk so that the rotation of the water will hold the eggs, and here it goes. Let's get ready with our plate. Onto the plate I'm going to add this lovely creamy garlicky sauce. Spread this out. And now let's check the egg. This is perfectly done, and directly let's put this over this yogurt. Time to add the butter, some more dill leaves, crusty toasted bread. Let's dig in. Nice runny yolk. This is out of the world. So luxurious, so warming. So do try this at your home and let me know how it turns. Do share, like and comment below. And don't forget to subscribe to our channel, Sanjeev Kapoor Khazana.